इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. Now the question is, two water taps together can fill a tank in 9 hole 3 by 8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? यहाँ पर आपको दो टैप्स दिए गए हैं. एक टैप दूसरी टैप से लार्जर डायमीटर का है और अगर हम दोनों टैप्स को सेपरेटली मींस एक एक करके, सपोज देयर आर टू टैप्स, टैप ए एंड टैप बी, तो अगर हम दोनों टैप्स को अलग अलग खोलें तो एक टैप जो कि बड़ा है उसको छोटे वाले टैप से 10 घंटे कम लगते हैं और अगर दोनों टैप्स एक साथ खोल दिए जाएं तो 9 होल 3 by 8 आवर्स का टाइम लगता है. ओके, तो आपको फाइंड करना है कि अगर सेपरेटली इंडिविजुअली टैंक्स को ओपन किया जाए तो इंडिविजुअली ईच टैप हाउ मच टाइम इट विल टेक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. लेट there are two taps, say A and B. We are assuming that there are two taps, tap A and tap B, and this also we are assuming that tap A has the larger diameter than tap B. Okay, we are also assuming that let tap A takes X hours to fill the tank separately. Okay, hence how much time tap B will take? So tap B will take X plus 10 hours. Why we are assuming this बेटा? आपको दिया गया है कि जो लार्जर टैप है दैट इज टैप ए, इट टेक्स 10 आवर्स लेसर देन द स्मॉलर वन. टैप बी हमने स्मॉल अज्यूम किया है तो इट मीन्स अगर टैप ए एक्स आवर्स लेता है तो टैप बी उससे 10 आवर्स ज्यादा लेगा. अंडरस्टूड? ओके, नाउ आपको पता होना चाहिए बेटा इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सेपरेटली पूछा जाता है, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन द टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट. तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे? आपने टैप ए का कंप्लीट जो टाइमिंग माना है दैट इज एक्स आवर्स, मींस एक्स आवर्स में कंप्लीटली फिल करता है टैंक को. सो टैप ए कैन फिल in 1 hour. How much time? आपको ये पता होना चाहिए. अगर टैप ए टैंक को कंप्लीटली एक्स आवर्स में फिल करता है तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल टाइम, दैट इज 1/x पार्ट. सी देयर, लाइक आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जाम्पल, लाइक इफ अ पर्सन कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ अ वर्क, so every day 1/3 means within 3 days it will be over. ओके, तो अगर आपको टोटल टाइम 3 डेज पता है कि किसी वर्क को कंप्लीट करने में लग रहे हैं तो एक दिन में उसका कितना पार्ट होता है? 1/3. तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने, क्योंकि हमने टोटल टाइम अज्यूम किया है एक्स आवर्स, सो टैप ए इट विल टेक 1/x पार्ट, इट विल फिल 1/x पार्ट इन एन आवर. सिमिलरली टैप बी can fill in 1 hour how much part? Tap B can fill the tank completely in X plus 10 hours separately. So in 1 hour it will fill the 1/x plus 10 part. Okay, it means A plus B together will fill in 1 hour. हाउ मच? दोनों का हम 1 घंटे का जो 1 घंटे का काम है उसको हम ऐड करेंगे, दैट इज 1/x प्लस 1/x plus 10. नाउ सॉल्विंग इट, x into x plus 10 will be LCM and here it will be x plus 10 plus x. Now here
In the numerator portion we will get 2x plus 10 and here we will get x square plus 10x. That is a plus b's 1 hour work. ओके, 1 घंटे में ये इतना पोर्शन फिल कर देंगे. अब फिर से उसी कंसेप्ट पे आ जाते हैं बेटा कि अगर कोई पर्सन एक दिन में किसी काम का 1/3 पार्ट करता है तो उस पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा. दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 डे वर्क. सो सिमिलरली 1 घंटे में टैप्स फिल कर रहे हैं इतना पार्ट, तो पूरा टैंक फिल करने में ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे. ए प्लस बी टुगेदर कैन फिल द टैंक in how much time. That is the reciprocal of 1 hour work. That is x square plus 10x upon 2x plus 10. Means a plus b को अगर साथ खोला जाए so दोनों कितना टाइम लेंगे. That will be x square plus 10x upon 2x plus 10. According to the question, a plus b can fill the tank in 9 whole 3/8 hours. Okay, it means we can compare these two values. This is the value in x, format of x, and this is the value given according to the question. So we can say x square plus 10x upon 2x plus 10 will be equal to 9 whole 3/8 hours. Now solving it, x square plus 10x upon 2x plus 10, it will be equal to 8 9 is 72 plus 3 75 upon 8 hours. Okay, now we have to solve this expression to find the value of x. Now see how to do it. See, earlier we got x square plus 10x upon 2x plus 10 is equals to 75 upon 8. दोनों तरफ आपका एक एक फ्रैक्शन है, so it will be solved with the help of cross multiplication. So we can say by cross multiplication, what it will be beta? Cross multiplication, what we will say? 8 into x square plus 10x will be equal to 75 into 2x plus 10. Now further solving, it will give you 8x square plus 80x is equals to 75 2s are 150x plus 750. Now solve it. 8x square plus 80x minus 150x minus 750 is equals to 0. Then it will become 8x square minus 70x minus 750 is equals to 0. Now 2 we can take as common, so it will become 4x square minus 35x minus 2 3s are 2 7s are 2 5s are 375. This 2, it will become 0 when it will go to the right side. Now the final equation we have got as 4x square minus 35x minus 375. Okay, now I am using here quadratic formula to solve this equation. By quadratic formula, according to the quadratic formula, how to find the value of variable x? That is minus of b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. Okay, now how to get the value of a, b and c? Comparing this equation with the standard form, that is ax square plus bx plus c. What can we say? A is equal to 4, that is the coefficient of x square. So here a is 4. B is coefficient of x, that is minus 35. And c is the constant term, that is minus 375. So substituting the values of a, b and c in the equation, we will get minus of minus 35 plus minus root b square, that is minus of 35 square minus 4 into a, that is 4 into c minus 375 upon 2 into 4.
Okay, now solving it. Minus it will become plus. 35 plus minus root of. Now first we have to solve it. Minus 35 square, it will be plus. So we can say 35 into 35. Solve it. 5 5s are 25. 5 3s are 15, 16, 17. Same with 3 5s are 15. 3 3s are 9 and 10, 11. Okay. See again. Okay, here it will be 0. 3 5s are 15. 1 carry over. 3 3s are 9 plus 1, 10. So it will become beta 1 2 2 5. So 1 2 2 5. And here minus plus. 4 4s are 16 into 375. It gives you 6000. You can check it. Okay. That it will be this one. Now again 35 plus minus root of. It will become 7225 upon 8. Now finding the square root of 7225. See, I am doing here. कैसे करेंगे? आप पहले pairing करेंगे. Now 72, 9 9s are 81. It will be more. So we will take 8 8s are 64. Now 12 minus 4. It will be 8. 25 and here 8 8s are 16. So if I'll put there 5, then see 5 5s are 25, 5 6 are 30, 32 2 here, 3 carry over, 5 1s are 5 plus 3 8. Means we are getting 85. So what we can write? 35 plus minus 85 upon 8 x. Now considering positive sign, here two signs we are having plus and minus. So first we are taking positive sign. So x will be what? 35 plus 85 upon 8. That will be 5 5 10, 8 plus 3 11 plus 1 12, 120 upon 8. That will be 8. 8 1s are 8, 8 5s are 20. Sorry, 8 5s are 40. That 15 hours. Okay. So we have got the value of x as 15 hours. Now taking the negative value, what we will get? X will be 35 minus 85 upon 8. That is, it will be minus 50 upon 8. So discard this value because x is what? This is the time. So time, it cannot be negative. Okay, so considering which value, we will consider the positive value. That means x we will accept as 15 hours. So x was what? It is the time taken by tab A. Means how much time will be taken by tab B? That we have assumed as x plus 10 it was. So it will be a 15 plus 10, that is 25 hours. So this is the answer. Tab A will take 15 hours and tab B will take 25 hours to fill the tank separately. Okay, I think it's very clear, this question. If you have any doubts, you can ask it again.